Nestled among the misty high altitudes of Himachal Pradesh, in the idyllic villages of Shimla, begins the story of India's finest apples. A tale that spans 400 kilometers and peaks at 13,000 feet in Kinnaur. These fruits of the mountains, nurtured by hands that truly know the land, carry forward a sweet legacy. एक टीआरपी जो शिमला एप्पल का है, इसका जूसीनेस और क्रिस्पनेस जो बाहर के एप्पल्स हैं उसके टेस्ट में और जो हमारा यहाँ का लेगेसी एप्पल है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन. जो वो एप्पल है, यू विल नॉट गेट दैट स्वीटनेस, क्रिस्पनेस, टेंगीनेस. और जो शिमला एप्पल है, तो व्हेन यू हैव अ बाइट ऑफ दैट, तो ये बोले इसका तो टेस्ट ही अलग है. As the cold winter and heavy snowfall of January and February give way to spring in March, apple trees burst into bloom, bearing their first flowers. Flowers transform into fruits, which then slowly mature to reveal their characteristic red color. Famous for its crunch and juiciness, Himachal apples are also marked with a distinct fragrance reminiscent of a cold and dewy mountain evening. ये और सेबों में इतना खुशबू नहीं आता है जितना यहाँ का सेब में आता है. चाहे कलर हो, चाहे टेस्टी हो, ये बहुत ही अच्छा है जी. Though the hilly terrain bathes the valley in sunlight and cool breeze, weather remains fickle, with hailstorms looming as the greatest peril. अगर वेदर थोड़ा सा ख़राब हो गया, ओला आ गया, ओलावृष्टि होगी, बारिश हो गई, तो वेदर में तो फिर कभी फूल ही झड़ जाते हैं. ओला आएगा तो फूल झड़ जाते हैं, तो कहाँ से होगी? जब फ्लावरिंग होती है उस टाइम ठंड नहीं पड़नी चाहिए. जब पूरा फूल होता है, अगर उस टाइम ठंड पड़ गई तो मर जाता सेब है. जीरो खत्म हो जाता है सब कुछ. अगर मौसम साफ जा रहा है तो अच्छे तो सेब अच्छा है, फिर अच्छा अच्छी रहता है. अच्छी फसल होती है. जनवरी फरवरी में अगर बर्फ अच्छी गिरे तो सेब बहुत अच्छा होता है. Once the fruit is ripe for harvest, accessibility poses a new challenge. Small farms bearing the weight of big dreams find the road to market as steep as the hills. पहले हम दिल्ली जाते थे, दिल्ली में सेब बेचते थे, चंडीगढ़ में सेब बेचते थे. अब हमारे बिग बास्केट वाले भी यहीं पास में आ गए, तो अब हम इनको भी देते हैं. 7 years ago, BigBasket came to Himachal with a vision to bring the best Indian apples to its customers across the country in the quickest way possible. Ever since then, the team has worked with apple growers to tide over challenges like lack of accessibility and unfair trade practices. फर्स्ट थिंग जो फार्मर देखता है डेफिनेटली दैट इज़ द कॉस्ट, कि वो हमें कॉस्ट क्या मिल रही है. उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज़ द अप्रोचेबिलिटी. एंड इफ़ समवन इज़ गिविंग मी 200 rupees a kg and I am not getting that credited into my account in next 1 year, so I don't think that solves any purpose. There used to be a lot of exploitation by the commission agents. I mean, the trick was give us a lollipop, give us fancy prizes, which just for 1 week everybody would start plucking apples and there would be a flood in the market and these people would drop the price to rock bottom, purchase everything, put them into the cold storage. The cost of apples is now determined based on size, taste and color alone. जब दिल्ली में हम जाते थे तो अंडर द टावल डील्स होती थी, तो पता नहीं होता था कि लाइक कि मेरे प्रोड्यूस को क्या मिला. और अब पिछले कुछ सालों से व्हेन डिफरेंट कंपनीज केम इनटू दिस पिक्चर, तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है. फार्मर को पहले से पता है कि आई विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ रेट पर केजी फॉर दिस साइज फॉर दिस कलर. At BigBasket collection centers, the harvest undergoes mechanical size grading as every lot is sorted by size in the presence of farmers, ensuring transparency and reliability. These grading machines are present at collection centers within the villages, making the process more convenient for farmers. Each enrolled farmer must ensure a commitment to quality,
That is a good thing, like the quality that BigBasket is having, because that's why I totally understand like why there is a lot of push at जब यहाँ farmers को बोला जाता है नहीं we need this quality, because I have seen that quality that जो being at customer end हमें मिलता है. Before the apples are sorted, graded, and packed, each lot is tested for 3 key factors: maturity, pressure, and sweetness. They must be at their peak maturity with high pressure, ensuring a firm and crisp crunch. And of course, they have to be perfectly sweet. Apart from ensuring quality, BigBasket also encourages farmers to embrace organic practices and produce a healthier fruit. 11,000 feet up in the mountains, the journey to source India's best organic apples leads to Nako, a village known for its organic apple farms. Here, scorching days and windy nights combined with short summers and long snowy winters to create nature's perfect recipe for growing apples. किन्नौर के अंदर शिमला डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सबसे हाइट पर इस एरिया का है 11,000 की हाइट पे। फिर यहाँ से ऊपर जहाँ हमारे ऊपर बर्फ़ पड़ता है वहाँ से ग्लेशियर आते हैं। फिर हम लोग झील का पानी लेके ऐसे ऐसे टंकी बना के स्टॉक करते हैं। फिर स्टॉक से हर बगीचे में ऐसा पाइप लगा के फिर हम लोग सिंचाई करते हैं। फिर हमारा बगीचा ऑर्गेनिक है, सिर्फ हम अपना गाय का भेड़ बकरी का खाद यूज़ करते हैं, खच्चर और घोड़े का। बाकी और चीज़ तो हम यूज़ नहीं करते, हमारा पूरा ऑर्गेनिक है। But what about pest attacks? Our grower shares a unique perspective. ये जो वाइट आपको दिख रहा है पेड़ के यहाँ ब्रांचेस में, इसको बोलते हैं हुलिया फीट। ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ में से एक है सेब के पेड़ों में। इसके जब ये पेड़ों में आते हैं तो लोग घबरा के कभी कभार बहुत अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि ये उल्टा और फैल जाता है, क्योंकि जो इसको ख़त्म करते हैं ना, जैसे चींटियाँ और चिड़िया वगैरह जो खेतों में आते हैं, वही इसको बगीचों में आके इसको खाते हैं और नेचुरली ये खुद ही कम हो जाता है। हमने देखा है कि चींटियाँ और चिड़िया इसको खाते हुए। अब पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्या हो गया, उससे काफ़ी बदबू आता है बगीचे में, तो चिड़िया वगैरह और कीड़े जो आते नहीं हैं जो इनको खाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उससे हमारे हेल्थ को भी थोड़ा, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो हमारा हेल्थ भी थोड़ा ख़राब हो जाते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है वो। Stoked by the possibility of all natural farming, we turned to one of BigBasket's oldest partners. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। आई एम बेसिकली ए डॉक्टर, आई एम अ सर्जन बाय प्रोफेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आई हैव रिटायर्ड एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी फ्रॉम IGMC शिमला। What is the motive of doing organic or natural farming is purely medical. मैं हमेशा सोचता था, मेरे घर के साथ जंगल है, कि वहाँ क्यों नहीं बीमारी लग रही है, मेरे ऑर्चर्ड में क्यों बीमारी है, एप्पल में क्यों लग रही है, जंगल में क्यों नहीं लग रही। देयर हैज़ टू बी सम रीज़न फॉर इट। देन आई रियलाइज्ड कि इसको ये तो हो सकता है पेस्टिसाइड ये इंसेक्टिसाइड इनकी वजह से हुआ हो। His determination to switch to organic farming 4 decades ago has given thousands of customers an opportunity to relish apples in their truest form. देखिए बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ए बैलेंस विच द नेचर कीप्स ऑफ द फ्रेंडली इंसेक्ट्स एज वेल एज द फोर्स। तो हमने जो केमिकल डाला वो केमिकल तो आइडेंटिफाई कर नहीं रहा ना कि ये फ्रेंड है या फो है, उसने तो सबको मार दिया। तो इससे बचने के लिए यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर वी कैन चेक एंड बैलेंस बोथ द थिंग्स। वो कैसे होगा? ओनली थिंग इज 3 थिंग्स यू हैव टू डू। नंबर 1, ह्यूमस चाहिए, मल्च चाहिए और नमी, वास्पा बोलते हैं। ये 3 चीजें करोगे, कुछ करने की जरूरत है नहीं। आई हैव गॉन ओवर ए पीरियड ऑफ 30 to 35 years from chemical to organic, then again to chemical, and then now to natural farming. Now I hope in another 2-3 years I have made this sustainable.
From Narkanda to Nako, Shimla's apples are handpicked and carefully packed to ensure the highest quality. Trusting in nature's balance, these apples are a product of sustainable practices. From their first bloom to the final harvest, Shimla's apples tell a story of heart and heritage. Together with BigBasket, these fruits journey from the hills to your home, carrying within themselves the essence of the mountains. BigBasket, bringing you the taste of India's sweetest apples, straight from Himachal. मारे भाइयों के यहाँ जरा तिदा का दूरा मारे डेवणो दिली मारे भाइयों डेवणो खाना चाहता हूँ मेरा धान की क्या करें बाय 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 फिर मिलेंगे